Hello everyone, Namaste and welcome to my YouTube channel. So, welcome to the first video of Cosmotellings by Ashti. So, this channel is going to be about astrology, numerology, tarot readings, switch word and energy circle remedies, and basically it's going to be about spirituality and how various spirituality fields can benefit you in numerous ways. So starting with how I got in this field, मैं बचपन से ही बहुत स्पिरिचुअल रही हूँ. आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ भगवान जी. हाउएवर आई नेवर इवन इमेजिन्ड कि मैं इसकी साइंसेस सीख पाऊँगी. So I think it was a random Wednesday. I was in my first year of college and मैं YouTube स्क्रॉल कर रही थी. मैं फूड वीडियोस देख रही थी YouTube पे एंड सडनली मेरे पास रिकमेंडेशन में आया एस्ट्रो अरुण पंडित जी लर्न द बेसिक्स ऑफ पामिस्ट्री. एंड आई डोंट नो कहाँ से बट इट लिटरली अट्रैक्टेड मी सो मच कि मैंने सोचा ओह मैं भी देखती हूँ कि ये क्या है. सो आई क्लिक्ड ऑन दैट वीडियो एंड मैंने देखा और मुझे काफ़ी कुछ समझ में आने लगा. So yes, the first science that I learned of occult was definitely palmistry. फिर उसके बाद मैंने palmistry पर बुक्स पढ़ी एंड मैंने अपने फ्रेंड्स की रीडिंग करी, अपने फैमिली मेम्बर्स की रीडिंग करी एंड इट वाज एक्चुअली वेरी नाइस. वी वर गोइंग in the right direction. Then after that I thought why not give a try to numerology as well, and I did. मैंने न्यूमरोलॉजी पर बुक्स पढ़ी, वर्कशॉप्स अटेंड करी एंड आई लर्नड हाउ यू कैन प्रिडिक्ट एंड गाइड समवन बेस्ड ऑन देयर डेट ऑफ बर्थ एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं खुद पर भी अप्लाई करती थी नेम न्यूमरोलॉजी, सो एवरीथिंग इंक्लूडेड. आई लर्नड एवरीथिंग एंड इट वाज सो इंटरेस्टिंग. देन आई थॉट दैट अब मुझे पामिस्ट्री भी आती है और मुझे न्यूमरोलॉजी भी आती है. अब एक चीज रह रही है, एस्ट्रोलॉजी, कुंडली रीडिंग. एग्जैक्टली. सो मैंने कुंडली रीडिंग सीखी. इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एट फर्स्ट. मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ होती है मैथमेटिक्स. I was wrong. I was absolutely wrong there. It is not mathematics. It is कुंडली reading. However, मेरा क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था एंड लाइक आई रियली वॉन्टेड टू लर्न एंड द थिंग वाज कि मुझे अपनी ही कुंडली पढ़नी थी. लाइक आई वॉन्टेड टू नो कि मेरी लाइफ में क्या है, लाइक व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स एंड एवरीथिंग. सो I learned astrology. I learned how to read the natal chart and उसके बाद मेरी learning शुरू हुई. I will never say that I have learned astrology completely. I will always and always be a student of astrology. एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, लाइक द कुंडली रीडिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब भी मैं कोई नया चार्ट पढ़ती हूँ आई लर्न समथिंग न्यू. either it's about the aspect or the degree or the transit, be it anything. So yes, I will always and always be a student of astrology. So after that I started practicing astrology. Like I used to read the charts of my friends, family, relatives and the feedback जो मुझे मेरे friends से मिला, it really worked as a motivating force for me because जो मैं उन्हें बताती थी, जो मैं उन्हें predictions देती थी वो correct होती थी and the remedies also which I used to suggest them, they actually worked for them. तो मुझे बहुत ज़्यादा encouragement मिला इससे and I thought okay now maybe even I am doing good in this field. So slowly and gradually I started applying the concepts of numerology, astrology in my daily life as well. And I started guiding my friends, family, my sister, brothers, everyone.
So everyone was very happy and I was thoda zyada happy. Then I thought that okay, एक चीज is like a lot of things are still left, but one thing that used to attract me since the very beginning was tarot. I was so intrigued by tarot कि एक कार्ड से how can you like predict future and ये सच कैसे हो सकता है, because all the readings that I have gone through were actually correct and they obviously acted as a guiding force for me and my family. So I thought कि okay, maybe I should learn tarot as well. So I approached my mentor and she's amazing. So yeah, tarot as well, and switch words have literally created magic in my life. Each and every situation I am in, and if it's a downhill situation, I always use switch words, and believe it or not, they work wonders for me as well as for my family. So yes, this was my journey into spirituality, and also I'm a big fan of crystals, and crystals have really impacted my life on some another level. So as you can see, I'm wearing so many crystal bracelets. So crystal comes in various forms, in stones, palm stones, idols and wands, bracelets, pendants, keychains. There are various forms of crystals. सो क्रिस्टल क्या करते हैं, हर क्रिस्टल के अंदर अपनी एक इंटेंशन होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लुकिंग टू अट्रैक्ट मनी, then the crystal that you should go for is pyrite. If it is happiness and abundance, then you should go for citrine, and they really affect us very positively. Crystals are amazing. So yes, I'm a big fan of crystals as well, and I will be posting about crystals on this page. Yes, so that was about my journey and what I will be posting on this channel. Now, as we have almost come to an end of this video, there are a few people I want to thank for supporting me, and the ones who are the reason why I'm sitting here right now and making this video. Very first, भगवान जी, गुरु जी, द यूनिवर्स. मैं इस चीज़ की फर्म बिलीवर हूँ कि लाइफ में सब चीज़ें प्लान्ड होती हैं. कुछ भी हमारे साथ इंस्टेंटली नहीं होता. जो चीज़ें हमारे साथ इंस्टेंटली होती हैं वो भी प्लान्ड होती हैं. सो मी मेकिंग दिस वीडियो एंड पोस्टिंग इट वॉज ऑल्सो प्लान्ड. सो थैंक यू गुरु जी फॉर गाइडिंग मी दिस वे. माई पेरेंट्स, जो एक्चुअली मेरे लिए भगवान की तरह ही है, क्योंकि उन्होंने मेरे को हर पॉइंट ऑफ लाइफ पे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है. मैंने कहा कि मुझे फील्ड चेंज करनी है अपनी, दे वर एब्सोल्युटली फाइन विद इट. इनफैक्ट दे सपोर्टेड मी एंड ऑल्सो इनकरेज्ड मी टू थ्राइव फॉर द बेस्ट. माई एल्डर सिस्टर खुशी दीदी, फॉर ऑलवेज बीइंग लाइक अ बैकबोन फॉर मी. अगर मेरी सिस्टर मेरे साथ ना होती तो शायद मैं जी भी नहीं पाती. No, I'm not exaggerating. This is the truth. All of my family members, Arvind Chachu, Urvashi Chachi, Anurita, my sister, my younger brother, Atulya, Anisha Bua, Vicky Fuji, Ayush Bhaiya, my elder brother, Mitali Chachi, Shashank Chacha, Diksha Mausi, who has been so supportive throughout. Even when my 12th result was coming out, she was with me even at that time. And Nikita Mausi and Upasna Mausi, who send me such encouraging messages. They really mean the world to me. You, my family members, have always supported me and encouraged me. आपका जो सपोर्ट होता है या फिर जो छोटे मोटे अच्छा काम कर रहे हो, वेरी नाइस, वेरी प्राउड ऑफ यू, यही मेरे लिए इतना ज़्यादा मैटर करता है. आई एम so थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू. आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव फ्रेंड्स लाइक तन्मय, आन्या, खुशी, पलक, श्वेता,
Grisha, Tanuja, Prachi, who have been a part of this journey from the very beginning. मैं इन्हीं के charts पढ़ती थी beginning में, and मैंने advice देती थी और फिर ये confirm करते थे कि हाँ हमारे बचपन में चोट लगी थी. So that was so nice, and I'm so grateful to each one of you. The way you guys support me, the way you trust me with all of your heart, it means so much. One of the most important person, Ridhima Bhabi, who is also my tarot coach, and she has also taught me a lot about crystals. So I am so grateful to you, Ridhima Bhabi, for teaching me so much, guiding me so much, and always being there for me no matter what the conditions are. Thank you so much for being such an inspiration. And lastly, each one of you who has watched this video, my audience, thank you so much. My heart is full of gratitude. If you have watched this video till here, I am so thankful, so grateful. I hope all the videos that will come in the future will be liked by you all. And if you like this video, then please like, share, comment, subscribe to my channel. And if you want to book a one-on-one Kundli reading session with me or a numerology reading session with me, then you can DM me on my Instagram handle that is mentioned in the description box here. I hope that you like my channel and my work, and I hope that we build a big community here. Thank you so much. Jai Guruji.